ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத்தியாயம் 1. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவ மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிமகூர்வத சஞ்சய. சஞ்சய உவாச்ச दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र सूरामहेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथ. दृष्टकेतुश्चैकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजश्च शैक्यश्च नरपुङ्गव. रामण्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा. अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च भगवत्सूरा मतर्ते त्यक्तजीविता नानाशास्त्रप्रकरणा सर्वे युद्धविशारदा. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वयिदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिता भीष्मं एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृत्तपितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चै सङ्गं तत्मौ प्रतापवान्. ततः सङ्गाश्च वीर्यश्च पणवानककौमुगा सकसैवाप्यहन्यन्त स सप्तस्तुमुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते मगधीशन्तने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदत्मतु. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा मृगोदर. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकीश्च पराजित. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो सङ्गान् तत्मो पृथक् पृथक्. सकोशोदार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्. व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्धराष्ट्रान् कविध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे तनोरुत्तं य पाण्डव. हृषीकेशं तथा वाक्यम् इदं माघ महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत
यावत्येतान्निरीक्षेऽहं योतु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युक्ते प्रियशिकीर्षव एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुकृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसितम् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रमदीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माघवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न स राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमे अवस्थिता युक्ते प्रणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुं इच्छामि ज्ञोतोऽपि मधुसूदन त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निगत्य दार्धराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापं येवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतान् आततायिन तस्मान्नागा वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स पाण्डवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो भगतश्चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्कर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया
दोषैरेतैकुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम गोपत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्यसुखलोपेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय दार्धराष्ट्राप्रणेहन्युस्तान्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवं बुद्ध्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं शापं लोकसंविघ्नमानस. முதல் அத்தியாயம் சம்பூரணம்.